किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई रियल पर्सन चाहिए होता है जिसके साथ हम बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन कर सकें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और अगर हम कोई लैंग्वेज लर्निंग कोर्स बाय करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट थैंक्स टू चैट जीपीटी इसके न्यू फीचर ने कम्प्लीटली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है एंड इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव। आगे बोल नहीं बता और सुपर फ्लेक्सिबल भी है। इट मीन्स अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं, चैट जीपीटी वॉइस कन्वर्सेशन इज दी बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रैक्टिस। और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरह से ये इंटरमीडिएट, मीडियम और एक्सपर्ट लेवल की ये परफेक्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट इसके साथ आपको कन्वर्सेशन करके बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील होगा। क्यों? एक तो ये गुस्सा नहीं करती, दूसरे नंबर के ऊपर ये आपको अप्रिशिएट भी करती है। लेट्स से आप बिगिनर, आपको सिंपली अपनी चैट जीपीटी के जो है डैशबोर्ड और आपको जो ये राइट साइड के ऊपर हेडफोन का बटन दिख रहा है इसके ऊपर सिंपल आपको टैप करना है और अब जो है मैं चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग कर रहा हूँ और बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर हूँ और मुझे टेंसेस भी बिल्कुल नहीं आते, तो मैं रिपीट आफ्टर मी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ आपके साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले एक इंग्लिश में टेंस बोलें, फिर उसके बाद उसको उर्दू में रिपीट करें और उसके बाद फिर मुझसे वो इंग्लिश में टेंस को रिपीट करवाएं। प्रोसेसिंग कर रहा है। बिल्कुल, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। हम एक साधारण वाक्य से शुरुआत करेंगे। पहले मैं इंग्लिश में एक वाक्य बोलूंगा, फिर उसे उर्दू में दोहराऊंगा और फिर आप उसे इंग्लिश में दोहराएं। इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। उर्दू, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब आप इंग्लिश में इस वाक्य को दोहराएं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। Great job. Now let's try another sentence. English. The cat is sleeping on the sofa. Urdu, बिल्ली सोफा पर सो रही है. Your turn to repeat it in English. The cat is sleeping on the sofa. Perfect. You're doing really well. Let's try a slightly more complex sentence. English. She will go to the market tomorrow. Urdu, वह कल बाजार जाएगी. Now repeat this sentence in English. She will go to the market tomorrow. और on top of that, आपकी मोबाइल की स्क्रीन अगर ऑफ भी है तब भी जो है वो चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और इस तरह से और डबल टैप करके इसको दरमियान में इंटरप्ट करके दोबारा से भी कन्वर्सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑन एन इंटरमीडिएट लेवल। आई एम डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और मुझे मीडियम लेवल की इंग्लिश आती भी है। इट मीन्स कि मुझे टेंसेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ी सी ईजी कन्वर्सेशन इंग्लिश में करें और थोड़ा बहुत मुझे उर्दू में भी गाइड करिएगा। You have reached the message cap for GPT-4. Please try again later. तो ये आपके साथ भी हो सकता है। ये थोड़ी देर बाद मैं दोबारा ट्राई करूँगा जब मेरा मैसेज कैप दोबारा रिन्यू हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी। ओके, सो नाउ अगेन से हम कंटिन्यू करते हैं। आई एम डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और मुझे मीडियम लेवल पर इंग्लिश आती भी है। इट मीन्स कि मुझे थोड़ा बहुत टेंसेस का भी आइडिया है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ स्मॉल ईजी कन्वर्सेशन करें इंग्लिश में और थोड़ा बहुत मुझे उर्दू में भी गाइड कर दीजिएगा। Sorry, I'm having issues right now. समटाइम्स चैट जीपीटी एरर भी देता है। आई एम डूइंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और मुझे मीडियम लेवल की इंग्लिश आती भी है। इट मीन्स कि मुझे टेंसेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कोई भी एक ईजी टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें और थोड़ा बहुत मुझे उर्दू में भी गाइड कर दीजिएगा। That's fantastic that you're learning English and already have some understanding of tenses. Let's have a conversation about how about we talk about hobbies? I'll start. My favorite hobby is reading. What about you? Do you have any hobbies? And of course, I can help guide you in Urdu as well. Just let me know whenever you need it. मेरा पसंदीदा शौक किताबें पढ़ना है। आपका शौक क्या है? My favorite hobby is doing exercise and also doing some running because it gives me energy and it makes me healthy. That's wonderful. Exercise and running are great hobbies for staying healthy and energetic. Yes, I do prefer doing the shoulder exercise more because in the man postures, in the man body, the main important part is the shoulders. The more wide shoulders a man have, it's beautiful for its looks. So I prefer doing shoulder exercises. Also my shoulder is weak, that's why I prefer doing shoulder exercises more.
because the shoulder is the main body part. तो ये था हमारा intermediate के लिए. Now we are going to do a little bit more longer conversation. So let's start. I'm doing English language learning. My English is pretty good and I can speak on any topic, and I would like to do a practice with you, and I want you to pick any topic and start conversation with me, and you should speak less and give me more chance. That sounds great. Let's talk about traveling. Have you ever traveled to a different country? If so, what was your favorite experience from that trip? I haven't traveled to any country yet, so I think on this topic I can't speak more. So give me another topic so I can speak more on that topic. Sure thing. Let's switch to a different topic. How about hobbies and interests? What are some of your hobbies or activities that you enjoy doing in your free time? This can be anything from sports, reading, cooking, to more unique interests. Feel free to share what you love about them. Yes, I would like to do exercise, and in the exercise I would prefer specifically the shoulder exercise because it makes the man body more beautiful. The more wide shoulder the person have, the better for its posture. That's a great perspective. Focusing on shoulder exercises is a smart choice for fitness and posture. Do you have a favorite shoulder exercise or routine that you follow? And how do you feel after a good workout session? Yes, actually I do have favorite exercise, but I don't really know the name of that exercise, but I do have. No problem. Describing the exercise works just fine. Could you tell me a bit about how it's done? This way I might be able to help identify it. Plus, it's interesting to hear about different exercises and how they benefit us. Yes, that exercise is actually performed by first I pick up two bundles and I lift them up above than my shoulder, and then I lift them down and then lift them up, and I do this repeatedly. That sounds like a dumbbell shoulder press. It's a popular exercise for strengthening and building the shoulder muscles. It's impressive that you're dedicated to it, as it can be quite challenging. How often do you include this in your workout routine? Maintaining a healthy diet plays a big role. What's your plan for achieving these goals? Do you have a specific routine or diet in mind? Yes, I do have. I'm eating more protein and less fat. Also, I have included some cardio exercises as well. तो ये थी हमारी little bit longer conversation, and I hope so आपको idea हो गया होगा कि ChatGPT के साथ practical conversation करना while learning English, while learning any language बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए कोई भी लैंग्वेज जो है वो सीखना आसान होता जाएगा. तो आई थिंक सो ChatGPT का ये वॉइस वाला फीचर इज़ दी बेस्ट फीचर फॉर द प्रैक्टिस फॉर द लर्निंग एनी लैंग्वेज, और ये मैंने अभी प्रूव भी करके आपको दिखाया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा, एक मिनट, वो सब्सक्राइबर लाइक